think we've lost him. Awal cerita film ini memperlihatkan pertandingan kriket yang super menegangkan antara India dan Sri Lanka. Gonna be another one of those Viraj Sharma specials. I think डाई मारने की वजह से उनका शोल्डर जैम हो गया है। कहते हैं कि तुम खेल नहीं पाओगे। Give me a minute, sir. And play Pakistan. Dengan pukulan keras yang dilayangkan oleh Viraj, akhirnya India pun memenangkan pertandingan dan berhak melaju ke final bertemu dengan Pakistan. India Pakistan के साथ टकराएगा। Did you try calling him? उसका फोन भी अनरीचेबल है. Pada esok harinya, Viraj pun menghilang tanpa jejak. Berita itu pun membuat Perdana Menteri India mengirim Kabir Sehgal yang ditugaskan tim Force India untuk menemukan Viraj. Kabir hanya memiliki waktu 36 jam sebelum pertandingan final dimulai. अगले 36 घंटों में तुम्हें विराज को बचाना. Kabir yang berada di India menuju Pakistan untuk melaksanakan tugasnya menemukan keberadaan pemain tersebut. Kabir meminta pendamping dalam misinya dengan memilih rekan bernama Junaid Ansari yang baru lulus menjadi polisi. शेर से वाकिफ है? जुनैद अभी अकादमी से निकला है। उसके लिए एडवांस में माफी चाहता हूँ। क्या करते हो? स्पेशल टास्क फोर्स इंडिया। Memanfaatkan informasi awal, Kabir dan Junaid mengunjungi kediaman wanita seksi bernama Sameira. Ia merupakan sosok yang sempat bersama dengan Viraj di sebuah pesta. हाय Actually, आज मेरी बेस्ट. मैं उस कार की बात कर रहा हूँ। मैं भी मेरी है. Just going for a spin. हाँ, 10 मिनट में आती हूँ. वो पागल हो जाएगी. Come on, do it for a fan. Sameira pun menjelaskan bagaimana dia bertemu dengan Viraj. Namun, mereka berdua pun tidak mendapatkan informasi yang dia cari dari Sameira. क्या लाइफ है? How did you get to the hotel? He took a cab. नहीं मिस इंडिया से डेट करी है, मतलब फॉर्म में होगा। और कल फाइनल है, मतलब पाकिस्तान। और आप जितने सड़ू लगते उतने बन नहीं पाए। Lalu, Kabir dan Junaid pun mengunjungi seorang pria yang mungkin bisa membantunya mendapatkan informasi mengenai Viraj yang hilang. स्पेशल टास्क फोर्स। तुझे कैसे पता? के साथ साथ विराज भी गायब हो गया हो। सुन चाचा, मैंने बहुत चाचियों को बेवा किया। कहीं तो खुद ही ना खो जाए, संभाल के। कौन है ये? समीर गाजी, इस शहर का सबसे बड़ा पार्टनर। Selanjutnya, mereka mendapatkan informasi petunjuk dengan menemui pria bernama Samir Ghazi yang sempat foto bersama dengan Viraj Sharma. क्यों किया बैंग बैंग? हाँ? के साथ एक फोटो ट्वीट किया है। तू उसे कहाँ और कैसे मिला? जो कुछ पूछना है पूल के अंदर आके पूछो। जेलस? His phone and wallet are missing. मेरा पूल गंदा हो जाएगा। गीले तो हो जाओ। Setibanya di sana, Samir pun menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Viraj tak lebih dan tak kurang hanya sebatas selfie. Thanks. Especially your new lip balm commercial. Saat masih berada di tempat Samir, Kabir dan Junaid mendapat informasi dari rekan kerja mereka berupa informasi jalur telepon yang digunakan Viraj. Mereka pun kemudian langsung menuju ke kota Dehra bersama dengan tim polisi lainnya. Setibanya di tempat tersebut, mereka menangkap wanita bernama Isika. Isika pun kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. क्या हुआ? वो मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और वो टकरा के। जुनैद, बोल के। Not bad, Junaid. Rupanya Isika adalah seorang pencuri yang telah mengambil handphone milik Viraj. Polisi menanyakan bagaimana dia mendapatkan handphone tersebut. Isika pun menjelaskan bahwa handphone itu hasil curiannya di sebuah toko. Lalu, polisi pun langsung melihat rekaman CCTV yang ada di toko itu. Sayangnya, wajah pria tersebut tidak terlihat. I solved my first case, Kabir. I solved it. कहाँ है? अरे ये रहा ब्रैडमैन. Melalui Isika, polisi mendapatkan sketsa wajahnya dengan meminta ciri-ciri dari lelaki yang telah dirampok oleh Isika tadi. अगर फाइनल कैंसिल हुआ तो मार दूंगा इसे.
Singkat cerita, Kabir dan Junaid mengejar seseorang yang diduga telah menculik Firaj. Sorry sir, plastic. Kabir, you have to see this. Di kantor polisi, ia pun langsung diinterogasi. Namun, ia menjelaskan bahwa ia hanya disuruh oleh orang yang ada di sketsa wajah tersebut, yang bernama Altaf. Tak chalta rahega. Can you please smoke outside? Ternyata, Firaj Sharma disekap dengan mata tertutup oleh pria bernama Wagah yang merupakan mafia judi. फॉर्म विराज, तेरा फॉर्म. Ia menawarkan Firaj untuk melakukan sebuah kesepakatan mengenai final yang akan dia mainkan melawan Pakistan. Firaj menyetujui dengan meminta uang muka dan meminta agar penutup matanya dibuka. Namun, Wagah tidak menyetujui permintaannya, sebab dia tidak ingin wajahnya dikenal. Kemudian Firaj dibebaskan di sebuah tempat. Ketika itu, dia bertemu dengan pria berpakaian polisi. मुझे मेरे होटल पहुंचने में मेरी मदद कर सकते हैं? भाई, मुझे पास के किसी पुलिस स्टेशन ले जाइए, प्लीज. Firaj meminta diantarkan ke kantor polisi untuk mengadukan perlakuan Wagah dengan bukti uang yang berada di tas miliknya. उस आदमी का नाम वागा है. Firaj tidak menyadari jika polisi yang dia temui adalah Wagah, sehingga dia pun kembali diculik. Wagah dan Altaf melakukan rencana berikutnya dengan memindahkan Firaj. Abuddin is out of our jurisdiction. Di kantor polisi, Kabir dan Junaid serta pimpinan mereka menemukan keberadaan Altaf yang menuju ke Abuddin. बनता है ले ले. Masalahnya, mereka sulit untuk ke sana, sebab butuh waktu seminggu untuk mengurus surat izin masuk. Namun, Kabir dan Junaid tetap pergi dengan dibantu oleh Isika. Melalui bantuan Isika, mereka tiba di daerah tersebut. Di sana, mereka tidak mudah menemukan Altaf, sebab ketiganya harus berurusan dengan anak buah Altaf. लेट हो गए तुम लोग. क्रिकेटर मर. विराज शर्मा कहाँ है? नहीं, बस रखूंगा. Ketika mereka menemukan Altaf, Isika dibawa kabur, yang membuat Kabir dan Junaid mengejar mereka kembali. Kabir dan Junaid sanggup menolong Isika, tetapi ketika selangkah lagi menangkap Altaf, tiba-tiba seseorang telah menembak Altaf hingga tewas. Mereka pun gagal mendapatkan informasi dari keberadaan Firaj. अब वो तुझे बता नहीं पाएगा. वो मुंबई से कमलेश है, कह रहा है कि आज पैसे नहीं दे पाएगा. Keluarnya dari daerah Abuddin, Kabir pun harus dideportasi ke India oleh pimpinannya karena melakukan aksi tanpa izin. खुदाफिज से. तूने मुझे जे कहा. Ketika Kabir berada di dalam pesawat, Junaid dan Isika tanpa diduga mendapatkan petunjuk keberadaan tempat Firaj disembunyikan. Keduanya menyaksikan video dari rekaman yang disisipkan oleh Junaid ke yancing milik Wagah. Mereka pun terkejut. Junaid berlari menuju pesawat untuk menemui Kabir. Put your hands behind your head and start walking. मुझे तो बताना मत कि जुनैद अंसारी ने स्पेन को बचाया था. Junaid lalu membawa Kabir keluar dari pesawat dengan berdalih bahwa ada pembajakan di dalam pesawat. Mereka pun selanjutnya menuju ke sebuah pelabuhan. Di tempat itu, mereka menemukan Firaj dengan tubuh yang disisipkan bom di sebuah kapal. जैकेट से निकलना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो बॉम्ब को डिजाइन करना पड़ेगा. Wagah kemudian menelpon mereka untuk meminta dikirimkan uang jika mereka ingin Firaj selamat. Ransom क्या है? 500 करोड़ तो ऐसे मांग रहा है जैसे So the big question is, will he play? Ketika uang sudah dikirim oleh pemerintah India,
Ia tidak mematikan bom tersebut. वो बंद नहीं हो पाएगा विराज को बताना मत बुरा लगे Saat ledakan terjadi, Wagah mengira ketiganya sudah mati. Namun saat dia sampai ke stadion, Wagah pun terkejut melihat Viraj berada di lapangan untuk bertanding. कैसे अपना शोल्डर डिसलोकेट करके सेमीफाइनल में तेरा टीनी नाम का एक मैजिशियन था जो ऐसे जैकेट से निकलने का ट्रिक करता था. सॉरी मैन पहली बार Dia tidak menyadari Viraj, Kabir, dan Junaid selamat dengan memanfaatkan sebuah teori pertunjukan sulap. मत लगाओ साले कभी कुछ नहीं मांगा सिवाय एक चीज Selanjutnya, Kabir dan Junaid mengejar Wagah dan menangkapnya. लो 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 खेलते हैं और क्रॉस बैटेड भी खेलते हैं और अगर इनको Sam, कैंसिल लात मारते हैं लात आपकी मेरे से लंबी है. Setelah kasus ini, Kabir pun kembali ke India bersama dengan Ishika yang dideportasi. I'll miss you too. चल अब ज्यादा सही. Everything सईद. उम्मीद करता हूँ तुमसे फिर कभी फिर तुमसे एक आखिरी काम. इसे इंडिया डिपोर्ट कर रहे हैं. कभी और तुम्हें लंग्स खराब करने हैं? और क्या क्या I'll think about it. Nah, itu dulu cerita dari film ini. Semoga Anda mengerti jalan ceritanya. Jikalau tidak, pura-pura mengerti saja. Oke? Kalau ada kritikan saran, boleh ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.